Friday Night Smackdown on Fox, sponsored by Progressive. Reigns, Bryan for the Universal title live. And we kick things off tonight. Bianca Belair. I'd like to provide a little sample. Ladies and gentlemen, a SmackDown Women's Champion. My pleasure to welcome you to Friday Night Smackdown. They're the dirtiest, some would say. Whoa, whoa, whoa. So allow the SmackDown Tag Team Champs to take it from here. What we do, and we... The Street Profits. Dawkins, now I know it's Friday Night Smackdown. I know what that means. We know Bayley's going to face Bianca Belair. Whoa. Whoa! But Bianca Belair in that ring, Bayley fires back! Bianca down and Bayley hammer. We're supposed to have a 6-person tag team match. Everywhere! Meanwhile, we are back on Friday Night SmackDown, 6-person tag team matchup. They've been going at it. Well, Bayley said Bianca got lucky down. The longest reigning women's champion in SmackDown. Son, and oh, and there's a nice drop kick. The Dirty Dogs are now represented in this 6. Angelo Dawkins must come in for his team. Now the double team by the Street Profits. Bayley sent through the second rope. Montez Ford flies and takes out To a team. Ooh. Meanwhile, Bayley driving Bianca in. Oh, and Dolph with a super kick. Next season is now go to the back of the line season. Rude planning. Montez to himself. Double team by the tag champs. Ziggler follows up with a splash. Rude as well. Oh, and Ziggler got caught. Ziggler tag made to Rude, and great combination. Ziggler, what a throw by Dawkins. This is the best Dolph. Oh, and there's a neck breaker. Ziggler breaks things up. Dolph saves the... Oh, wow, the strongest. The power. Not supposed to happen. Now, and Bayley runs into a right hand. Watts her. KOD. Now looking to roll Dawkins up. Tights. Oh, with a whip of the hair. Rude screaming in agony. And there it is. Top rope from the heavens. On Rude. Total team effort. Profits and Belair win. Show, power, intelligence, the EST. Please welcome my guest, Daniel Bryan. How does that weigh on your mind or affect your preparation? Maybe you should ask Roman Reigns the same question. A fair fight, one-on-one against Roman Reigns for the Universal Championship. My first title defense will be against somebody far, far, far too long. Cesaro. He thinks he's going to beat Roman Reigns tonight, and then he's going to give his buddy Cesaro. Look, my prediction for this match tonight is pretty simple. Actually, I do have quite a bit of history with Roman Reigns, but my prediction for this match tonight is that Daniel Bryan wins in one of the biggest upsets of all time. Tonight is our main event. Roman Reigns defends the Universal Championship. Women's Division Tag Team match scheduled for one fall. Tamina and Natalya. Single matchups. Very different than tech. Nia Jax and Shayna Baszler. And on Tamina and Natalya, 2-time WWE Tag Team in SmackDown today. The irresistible force is powerful, but look at Tamina. A lot of damage to the abdominal when you're flying down like that. And now Shayna. Tag team champs working in unison. That hasn't been normal as of late. As iconic. Now Tamina trying to fight out. But look at Tamina now powering Shayna up into a slam. The tag team champs are... Natalya able to counter and follows it up into that discus clothesline. Title takers. German suplex released by Natalya. Background from Shayna Baszler. Nia's back in the ring after being on the side here. Tag. Shayna looking for the Karafuda clutch. Natalya up to the top rope again and again thwarted. Nia Jax with the headbutts, and now Baszler comes in off the tag. Big headbutt, Michael Cole. Superfly splash on Baszler. Tamina and Natalya win. This has to catapult them up the ladder at this point. Roman Reigns versus Daniel Bryan. My prediction, Roman Reigns. Reigns, Bryan, Universal title live tonight. You look at me, you judge me. I've always lived in this reality. In high school, you were so unaware. Lost a 3-bedroom house with a white picket fence. I could help you. I could give you the keys, but I won't. Apollo Crews defends his Intercontinental Championship. The Intercontinental Championship! Big E! Got
his work cut out for him tonight. It's Big E versus Apollo Crews. A WrestleMania rematch. Apollo Crews win the championship from Big E at WrestleMania. They're saying it was in great joy that he saw Kevin Owens. More than a dozen WWE Hall of Famers have held. WWE wanted to be the Intercontinental Champion. Full of wits early. And Big E, not back using Big E again. A powerful hip toss. It's advantage tonight. Big E must pin or submit. Big E delivers the splash on the apron. Oh! Bounced off the top rope. And now, Apollo Crews with a clothesline. And on the other side of the ring. And Big E in a build momentum. Could he be closing in on the champ? Back in Apollo Crews. Salt off the apron. Caught him. Belly to belly plants Apollo. The big man is rumbling. Splash. Continental title and a kick out by Apollo. Apollo Crews mighty played it with the Uranagi. Up on the apron. Big E. Runs into a knee. Oh my goodness. Apollo with a splash! In the position for the big ending! And Commander Aziz! Big E! Before Aziz got involved. And that's why you have Commander. Looking from behind. KO. Kevin Owens. 9-3-50. But Apollo back on his feet. Looking for the Nigerian nail with Kevin Owens. And Big E back into the ring. In the champion. And now Big E and Kevin Owens taking it to Commander. Headbutt to Big E. And now Sami Zayn! Sami Zayn with a haluma! Sami Zayn took out Kevin Owens. Nice to Commander Aziz. Get him out of my ring. Easy. Hang on. You go. Hey. No problem. We're cool. No problem. Nigeria coming up in our main event. It is for the Universal Championship. I don't think anyone can take Roman Reigns down. Reigns versus Daniel Bryan live coming up next. My prediction is that Daniel Bryan will win the Universal Championship. Prepares for Seth Rollins. There, ladies and gentlemen, powerful Universal Champion Roman Reigns. Daniel Bryan! I'm so sick. Daniel Bryan always defy the odds, yes. Did Daniel Bryan achieve the ultimate? Everybody believe that Daniel Bryan will beat Roman Reigns? Yes! He's the one to beat Roman Reigns! Yes! And will he do it? No! Bryan will not beat Roman Reigns. It is now time for our Universal Championship, the consummate underdog. Do it again. Is there one more miracle left in Daniel Bryan? Championship match live next on Smackdown. A WrestleMania rematch. Cesaro goes one-on-one with Seth Rollins. If Roman Reigns wins, Daniel Bryan packs his bags and goes home for good. Friday Night Smackdown on Fox is sponsored by the confident Universal Champion. He was 3 years old by his Hall of Fame fan across the globe. The WWE Universal for the Universal Championship. It's not only about bringing Roman Reigns. This is electric. Let's go. Universal Championship! It is for the Universal Championship. And Bryan with Ronnie Reigns. And Roman Reigns bleeds. Down. Looking for the yes lock, perhaps. Roman Reigns trying to sprint. Bryan gonna fly. Running knee. The champion's down. But this is the here and now on Friday Night Smackdown on Fox. He's in trouble. Daniel Bryan now. And again. Vintage Daniel Bryan. And vintage Roman Reigns. Roman Reigns making the challenge that Smackdown episode 1132 consecutive. Roman Reigns defending against Daniel Bryan. Is rallying behind Daniel Bryan. Doesn't matter. Knee to the mouth. Wildly Bryan. Look at him use his quickness, but runs into an elbow. And look at disgust on Reigns' face. One thing is, you will never question. And Bryan now with an uppercut. And another one. Daniel Bryan dropped toe hold. Reigns bounces off the high opportunity. And Daniel Bryan looks comfortable up there. Looking for the Hurricane Rana. Power bomb off the second rope. Bryan's still alive, but Reigns is taking control. Daniel Bryan, who's whipped into the barricade. Eating knees right now, Daniel Bryan. Daniel Bryan could be. And Daniel Bryan slips underneath and buys himself an opportunity here. Up to the top rope now. Back suplex for the title
Roman Reigns ducks underneath. Samoa drop to the challenge. Super. No! Super kick right in now. Oh, taking out Reigns. Roman Reigns is hurting though, up over the top rope. Bryan in his wheelhouse. Reigns catches it. Reigns down. Oh! Reigns primed and ready. Oh, through the barricade. Bryan diving headbutt to the bad armor. Doing it, a kick out by Roman at 2. And Roman Reigns with a Superman punch to his ability. Running knee. Covered out by Bryan. It's over. Reigns gets his foot up. Spear. Championship. Cover now on Bryan. Bryan's still in this match. Bryan's career on SmackDown on the line. It's locked in. Yeah, trying to lock it in. Daniel Bryan now taking down. Bryan's able trying to slip out of this. How is he slipping out? Center of the ring. Daniel Bryan. Reigns has got no. Bryan. Will Reigns tap? Able with grit. We're seeing it all here tonight on Fox. Power of Roman Reigns, hurt arm and all. This match has had to take so much out of both of these. Back of Daniel Bryan's head. What great competitor. Taking him to the limit here tonight. Another one again. Beaten just about senseless. A career out of this type of situation. Oh, by the submission, the guillotine with the right arm, the bad arm. And now look at this. Roman Reigns switched to the end. Bryan nowhere to go. Reigns now wrapping his legs around the body of Bryan. Daniel Bryan is fading. Daniel Bryan may be out. He is. Bryan. Wow. Here is your winner, Roman Reigns. Reigns is. These two legends. Because he wanted Daniel Bryan out of his hair. Champion in WWE history. Now, I fear. Bryan. Cesaro. The Swiss Superman made it Daniel Bryan, an uppercut to Roman Reigns. Now Cesaro. Oh, and an uppercut driving Reigns into the barricade. Look at Cesaro go. Bryan from even more disaster after the match. It's Jey Uso. And main event Jey Uso. Says Cesaro, what the? Oh, Bryan's down. To the world. 70 पैसे के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के लंबे सपोर्ट की, जिस वजह से मुझे स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा था पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ महीनों से, तो उसको आप देख सकते हो स्टॉक का जो एरिया है ये 40 पैसे और 50 पैसे, ये पूरा पूरा एक सपोर्ट एरिया है इसका। ठीक है, आप ये जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ये एक सपोर्ट एरिया था इसका। ठीक है, इसी वजह से मैं स्टॉक को कह रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट एरिया है। डेफिनेटली आप स्टॉक को डाल में रख सकते हो। यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो बाउंस स्टॉक को आराम से, जो उसका लास्ट स्विंग है ₹1.15 के आसपास लेके जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 70 पैसे के आसपास स्टॉक को डाल में रखते हो तो डेफिनेटली आपको अगर ₹1.15 ₹1.10 तक भी स्टॉक अगर ट्रैवल करता है तो आपको आराम से 30% 40% की रिटर्न मिल सकती है। राइट, अगर आप चाहो तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया है, कंपनी का कामकाज भी बहुत बढ़िया है। अभी कामकाज के बारे में बतलाऊंगा आपको, और अभी स्टॉक का नाम पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं चार्ट के बारे में। हम एक चार्ट में और क्या दिख रहा है, 1 साल का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। आपको क्या दिख रहा होगा दोस्तों, चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि स्टॉक लगातार एक हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, हायर हाइज का पैटर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लो मान लीजिए ये बनाया स्टॉक ने, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइज। ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, तो इसको हायर हाइज का बोल लीजिए पैटर्न बोला जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में स्टॉक में भी बिल्कुल वही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जिसकी मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो ये लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब दोबारा तीसरे बार ये लो बना के ऊपर जाने का, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि एक तरह का ये हायर्स हाइज का पैटर्न है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पैटर्न सक्सेसफुल होगा, और डेफिनेटली आपको आराम से यहाँ तक रेजिस्टेंस जो है ₹1.25 और ₹1.30 के टारगेट आराम से दिखा सकता है, आराम से। तो मतलब आप अगर आप 70 पैसे या 65 पैसे के आप स्टॉक को बाय करते हो तो आपका पैसा डबल तो हो सकता है। डबल मतलब 100% की रिटर्न आपको दिखा सकता है। तो भैया अगर आपको 100% की रिटर्न चाहिए मात्र 1 या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, तो स्टॉक को आप में रख सकते हो। मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ आपने गैस कर लिया, अगर गैस नहीं किया तो देख लो स्टॉक का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम जो है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड है। ठीक है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है। डेफिनेटली स्टॉक को डाल में रख सकते हो। राइट, अगर बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल की, तो एक बार थोड़ा फाइनेंशियल का ओवरव्यू ले लो। फाइनेंशियल इतने दमदार नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, जिस हिसाब से स्टॉक का अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से ठीक है। ठीक है, इतने फार बेटर नहीं है, लेकिन ठीक है, देख लो फिर भी एक बार। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के जो NSE और BSE का डेटा जो परसों ट्रेड हुआ था, ऑलमोस्ट 800K के आसपास का इसमें वॉल्यूम आया था।
NSC में और BSC में भी मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख के आसपास या 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, ठीक है। और ऑलमोस्ट BSC में तो 100% की डिलीवरी लोग घर लेके गए, और NSC का डेटा में थोड़ा ग्लिच आने की वजह से उसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरी नॉलेज कहती है एटलीस्ट 50 to 70% का डेटा हमें ये बता रहा है कि NSC में लोग घर लेके गए माल परसों की डेट में, मतलब वीरवार के दिन को, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक का बाजार में रख सकते हो, ठीक है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट गैम्बल नहीं खेलना, 1000 शेयर बाय करके छोड़ दो, 1000 2000 जो भी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो जैसे आपको पता है कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग का काम करती है, ठीक है। NSC BSC दोनों में लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हो 120 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे मैंने आपको बतलाया। और स्टॉक का जो हाई है ₹1.25, तो एटलीस्ट आप ₹1.40 के टारगेट के लिए स्टॉक पे वेट कर सकते हो। बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी सस्ते में स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो मैं आपको एक बार कंपनी का प्रॉफिट से गो थ्रू करवा लेता हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और जैसे आपको पता है कंपनी अपने बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है, बहुत सस्ते में आपको मिल रही है। और जो कंपनी के नीचे गिरने का कारण था दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी ने लास्ट 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ शो करी थी, इसी वजह से स्टॉक आज ₹1 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो भाई पैनी स्टॉक है, तो डेफिनेटली पैनी ही इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आवश्यकता नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर बात करते हैं कंपनी का सेक्टर की, तो एक IT सॉफ्टवेयर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो स्क्रीन में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की जो सेल्स थी वो 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास बैठती है, ठीक है, हर 3 महीने में। और एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा है, 6 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, 2 करोड़ 2.79 करोड़, मतलब कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल कंपनी है। और लगातार बात करते हैं मार्च के आसपास बस कंपनी ने थोड़ा लॉस दिखाया था 7 करोड़ के आसपास। अगर नेट इनकम की मैं बात करता हूँ, तो नेट इनकम भी आपको नीचे देखने को मिल सकती है। कंपनी लगातार 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल कंपनी है, उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली अगर 3 क्वार्टर से कंपनी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट दे रही है बुक्स में, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं स्टॉक का अपने रडार में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मल्टी बैगर होगा, ठीक है। मल्टी बैगर होने के लिए स्टॉक में एटलीस्ट या तो वो स्टॉक बहुत जीरो हो, ठीक है, समझ पा रहे हो, या तो बहुत जीरो हो, या तो बीच में ना हो, बस आप समझ रहे हो, बीच में बिल्कुल भी ना हो, या तो जीरो हो बिल्कुल ही, या बीच में बिल्कुल ना हो। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक अभी बीच में ट्रेड कर रहा है, तो बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप एक गैम्बल खेल सकते हो, ठीक है। तो भाई ज़्यादा बड़ा गैम्बल खेलने की आवश्यकता नहीं है स्टॉक में, छोटा मोटा गैम्बल खेल के आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस ईयर टू ईयर बेसिस की, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है वो लगातार गिरी है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था स्क्रीन में, ठीक है।